अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हार्ट इशू सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान इसहाक़ कोलाची। नाज़रीन, जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे, पॉलिटिकल सिचुएशन हिन टाइम मुल्क में तमामु घणी पेचीदगी जी तरफ़ वञे पई ऐं इजलास बि थियनि पिया। अॼु रिसेंट डेवलपमेंट इहा आहे त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ कोयटा ऐं बलूचिस्तान विया आहिनि ऐं उन्हनि जेको आहे एपेक्स कमेटी खे इजलास कंदा, जंहिंमें वॾो वज़ीर बलूचिस्तान ऐं हुतां जी जेका काबीना आहे उहा उन्हनि खे रिसीव कयो ऐं उन्हनि सां उहो जेके इशूज़ ते इजलास में शिरकत कंदा। त उन सां गॾोगॾु ॿिए तरफ़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कराची में ख़िताब कयो आहे, मुराद शाह साहब ख़िताब कयो आहे। उन्हनि सोलर सिस्टम जो जेको आहे नओं मनसूबो हिकिड़ो इजाद कयो आहे, जंहिंमें 2 लख घर जेके आहिनि उन्हनि खे सोलर सिस्टम मुहैया कयो वञे थो ऐं बिलावल भुट्टो साहब जो चवणु आहे त असां अवाम खे वधि में वधि रिलीफ ॾींदासीं ऐं उनखां अलावा सोलर सिस्टम जेको आहे सिंध जे हर ज़िले ताईं पहुचाईंदासीं। उन मामले ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु मौजूदु आहे अदीला अंसारी साहिबा, जेका पीपी लेडीज़ विंग जी अॻुवाण आहे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैडम ये बताइएगा कि एक तो रिसेंट जो डेवलपमेंट है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, उसको आप कैसे देखती हैं? और ये खुशाइंद ख़बर है यकीनन कि जो लोग बिजली के बिलों की वजह से परेशान थे, अब वो एटलीस्ट उनको ये सहारा मिल जाएगा कि उनके पास सोलर सिस्टम की जो अवेलेबिलिटी होगी वो उनके पास मौजूद होगी। इसमें देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में जो मैनिफेस्टो दिया था उसका अहम पॉइंट जो था वो सोलर एनर्जी था कि सोलर एनर्जी से जो है वो आवाम को मुस्तफ़ीद किया जाएगा। तो आज वो वादा जो है उसकी तकमील हुई है और ये बहुत खुश आइंदा बात है सिंध के लोगों के लिए और कराची के, क्योंकि कराची सिंध का हिस्सा है। तो पहली जो फेज़ है उसमें हमने आज देखा कि कराची और लाड़काना यहाँ के लोगों को दिया गया है। फर्स्ट स्टेज के अंदर पहले फेज़ में 50,000 लोगों को ये होम सोलर स्कीम के तहत जो है वो सोलर पैनल दिए जा रहे हैं, जिसके में आपकी बैटरी है, आपकी लाइट्स, 2 लाइट और 2 पंखे आप उसमें बासानी चला सकते हैं। तो ये बिलावल भुट्टो ने जो वादा किया था अपने मंशूर में, आज वो वादा जो है वो पूरा हो गया है। उसका फर्स्ट फेज़ है और इंशाल्लाह ये ऑन गोइंग प्रोसेस रहेगा और पूरे सिंध में जहाँ जहाँ लोग उस क्राइटेरिया में आते हैं कि इतने यूनिट बिजली के जिनको लोगों को देनी है, तो उनको सबको जो है ना ये सोलर पैनल दिए जाएंगे। जी, अच्छा ये बताइएगा कि अभी एक तो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें क्या कहेंगे? उस हवाले से मुलाकातें भी हो रही हैं, सदर आसिफ ज़रदारी साहब मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी हुई, और क्या समझती हैं कोई नई अमेंडमेंट लाई जाएगी पार्लियामेंट में या जजेस के हवाले से एक्सटेंशन बढ़ाई जाएगी? क्या देखती हैं आप इसको? देखिए, मुलाकातें होना और लीडरान की और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की होना ये जमहूरी अमल का एक हिस्सा है, ये सिलसिला है। अगर मुलाकातें नहीं होंगी तो आगे फर्दर काम कैसे होंगे? और जहाँ तक अमेंडमेंट्स और नए लॉज आने की बात है, ज़रूर आना चाहिए। प्रोसेस में भी बहुत सी चीज़ें हैं और असेंबलीज़ और पार्लियामेंट होती ही इसलिए है कि जहाँ पे आवाम के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो लेजिस्लेशन की जाए, और जो इदारे हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं और जो इस मुल्क का हिस्सा हैं इदारे, उनकी फलाह और बहबूद के लिए और उनकी अच्छी प्रोग्रेस के लिए जो है वो काम करने की ज़रूरत है और काम करना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि ये मुलाकातें भी जो हैं इसी सिस्टम का हिस्सा हैं और इंशाल्लाह जो है आने वाले वक्त में पाकिस्तान की आवाम ये देखेगी कि काफ़ी जो उनके मसाइल हैं, क्योंकि हमारे पास वसाइल कम है और मसाइल ज़्यादा हैं, तो इंशाल्लाह उनके मसाइल का जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो हल होगा। अच्छा ये बताइएगा कि अभी बिलावल भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी जो है वो इत्तेहादी गवर्नमेंट है, उनकी हुकूमत है, 50% हम उनकी हुकूमत कह सकते हैं। क्या वो नून लीग को नहीं कहते कि आप जो है दिन ब दिन टैक्सेस बढ़ा रहे हैं और महंगाई बढ़ा रहे हैं, उसको थोड़ा कम किया जाए, जैसे आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके? देखिए, इसमें हम जब देखते हैं कि जो इलेक्शन के बाद रिज़ल्ट आया तो उसमें कोई भी पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने मुल्क की बका, माशी इस्तेकाम और जो सियासी अनसर्टेनिटी थी उसका हल ये हुआ कि हमें मिल के बैठ के जो है वो हुकूमत में काम करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जो है वो उस हुकूमत के साथ हैं, पर ऐसा नहीं है कि जो इश्यूज़ आवाम के मसाइल हैं और उनके ऊपर चेयरमैन बिलावल भुट्टो बात नहीं कर रहे हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें कि जो बिजली का इशू सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नेशनल असेंबली में उठाया,
چیئرمین بلاول بھٹو سے لے کے جو ہمارے جو ہیں وہ لیڈران ہیں، انہوں نے سب سے پہلے بجلی کے اوپر بات کی، اور بجلی ہی جو ایک عوام کا دیکھیں بیسک جو نیسیسٹی ہے وہ آپ کی بجلی ہے، اور آپ دیکھیں کہ کتنی جو ہے وہ تیزی سے یونٹس کے اندر اضافہ ہوا. تو سندھ گورنمنٹ نے اسی حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے انیشیٹو لیا کہ سولر انرجی کے تحت ان لوگوں کی مشکلات کو کم کیا جائے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ان کو حکومت بنانے کا جو ہے وہ موقع ملتا تو وہ پورے ملک کے لیے جو ہے یہ جو ہے وہ پالیسی ہوتی. پر اس میں بھی چیئرمین بلاول بھٹو نے آج بھی اعلان کیا ہے کہ سی ایم سندھ مراد علی شاہ جو ہیں وہ پی ایم سے ملیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے یہاں پہ سولر انرجی کے تحت لوگوں کی مشکلات کم کر رہے ہیں اور کم کریں گے. تو اگر وہ یہی چیز یہی پالیسی اس پائلٹ پروجیکٹ کو اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں اور صوبوں میں امپلیمنٹ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ عوام اس سے زیادہ مستفید ہو سکے گی. اچھا میڈم یہ بتائیے گا اس گورنمنٹ کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے 1-2 سال کے اندر یہ کہا جا رہا ہے ذرائع سے کہ یہ حکومت نہیں چل پائے گی، کیونکہ یہ جو حکومت ہے وہ ایک تو اتحادی حکومت بنی ہے اور اگر پیپلز پارٹی کی سپورٹ نہ ہو تو یہ حکومت گر سکتی ہے. ابھی دوسرا جو مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے، اب اس کے بعد تو 2/3 میجورٹی بھی نہیں رہی اس گورنمنٹ کے پاس، تو اب کیسے دیکھتی ہیں اس حکومت کو کہ کب تک چلے گی؟ اور ابھی 2/3 میجورٹی کے لیے کیا حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو سکے گی؟ دیکھیں ایک تو میں پامسٹ نہیں ہوں تو میں کوئی یہ دے سکوں ڈیڈ لائن کی حکومت اتنے وقت چلے گی اور اتنے وقت نہیں. حکومتوں کو چلنا چاہیے. اتحادی حکومتیں پہلے بھی بنی ہیں. اگر اسی طرح الیکشنز ہوتے رہے، الیکشن ہونا اوور اے نائٹ کام نہیں ہے یا کوئی 5-10 روپے کی بات نہیں ہوتی. ملینز اینڈ ملینز اس کے اندر جو ہیں وہ پیسے انوالو ہوتے ہیں. ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. حکومتوں کو چلنا چاہیے. جمہوری نظام اور جمہوری سسٹم کو جب آپ جو ہیں وہ کولیپس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ملک کے اوپر برڈن بھی آتا ہے اور مسائل میں جو ہے وہ حل نہیں ہوتا ہے مسائل، بلکہ ان میں اور اضافہ ہوتا ہے. تو یہ حکومت بھی میرا خیال ہے کہ چلے گی، پر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں حکومت کو توجہ خاص طور پہ دینے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. عوام کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کا ایک اہم حصہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ چیئرمین بلاول بھٹو سب سے زیادہ وہی عوام کے ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں. اور اس کی آپ مثال سندھ میں دیکھ لیں کہ جو وعدے کیے گئے، جو مینیفیسٹو میں دیا گیا، جو اس میں کہا گیا کہ ہم یہ عوام کے لیے کریں گے، اس کو ہم وہ فیسلٹیز عوام کو دے رہے ہیں. اور دیکھیں اس میں ایک اہم چیز، سندھ وہ صوبہ ہے جو سب سے زیادہ ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے پاکستان کی معیشت میں. آپ سیکنڈ اس میں دیکھیں کہ تھر پاور کول پروجیکٹ گورنمنٹ آف سندھ کا ہے. اس کے تحت بجلی جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں دی جا رہی ہے. تو اور کوئلہ سندھ کے پاس جو ہے وہ کافی وافر مقدار میں جو ہے وہ موجود ہے. اور چیئرمین بلاول بھٹو اس کے اوپر بھی اپنی ایک پالیسی اور ویژن رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کر کے عوام کو جو ہے نا وہ اس سے ڈائریکٹ ریلیف پہنچے. بالکل، یہ بات بالکل آپ کی درست ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ سندھ جو ہے سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو کم وسائل ہوتے ہیں وہ بھی سندھ کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ مراد شاہ صاحب جو ہیں وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں پرائم منسٹر سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ فنڈ دیا جائے تاکہ جو 2022 میں سیلاب کی صورتحال تھی تو اس عوام کے لیے کچھ ہم گھر مہیا کریں اور ان کو جو ہے کچھ زمین مہیا کی جائے تاکہ وہ جو غریب ہیں جو بے گھر ہو گئے تھے ان کے لیے کچھ نہ کچھ مدد کی جائے. تو کیا سمجھتی ہیں نون لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بجٹ دے گی اور فنڈ دے گی جیسے وہ سندھ کی خدمت کر سکیں؟ دیکھیں انفارچونیٹلی سندھ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جتنا ہم ہماری اس کے اندر ریونیو جنریٹ بھی کر رہے ہیں اور ایک اہم رول پلے کرتی ہے پاکستان کی اکانومی میں، تو اتنا اس کو شیئر نہیں مل رہا ہوتا. اور 18 امینڈمنٹ کے بعد تو ہر صوبے کو جو ہے وہ انڈیپینڈنس حاصل ہے اور ان کو ان کا شیئر ملنا چاہیے. اور پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس ایشو کو جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ ریزالو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سندھ سے جو ہے وہ پاکستان کی ترقی جڑی ہوئی ہے. کراچی جو ہے وہ سندھ کا حصہ ہے اور معاشی ہب ہے پاکستان کا. تو سندھ ترقی کرے گا، کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا.
اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ مہنگائی اس ملک میں جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اس پر قابو پانا ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے. اس کے لیے یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہمارے جو معاشی مسائل ہیں اس کو کیسے بہتر کیا جائے. ایشوز تو ہیں لیکن اس کو بہتر کیسے کیا جائے؟ دیکھیں وہ مہنگائی پہ جو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم لاسٹ 3 منتھس کے انڈیکیٹر دیکھیں، کیونکہ میں بھی ایک عام عوام ہوں، میں بھی مارکیٹ جاتی ہوں، میں بھی چیزوں کی خریداری کرتی ہوں، کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہوتی ہے نا، وہ اکنامک انسرٹینٹی کو جو ہے نا وہ اور ایگریویٹ کرتی ہے. تو پولیٹیکل انسرٹینٹی رہی، پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کافی جو ہے وہ اپنی ٹینیور سے زیادہ جو ہے وہ رہی، تو یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو آپ کی اکنامک گروتھ میں جو ہے نا بہت نیگیٹو رول پلے کرتے ہیں. انہی کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ مہنگائی اور انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے. ڈالر کو آپ نے دیکھا کہ کتنی تیزی سے جو ہے وہ بڑھتا رہا. اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی یا انسٹیبلٹی آتی ہے تو اکنامک انسٹیبلٹی کو اپنے ساتھ لاتی ہے. پر مجھے لگتا ہے کہ اب کچھ جو ہے وہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، جس میں سب سے اہم جو چیزیں وہ ہے بجلی کے آپ کے ہیوی بلز. اور اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی ایک جو ہے وہ پالیسی ہے، مستند پالیسی ہے، ایک اسٹانس ہے کہ ہمیں اس میں جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینی ہے. اور اس کے لیے بار بار جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ چیئرمین اور لیڈرشپ جو ہے وہ بات کرتی ہے کہ ان مسئلوں کا حل کیا جائے، مہنگائی کو کم کیا جائے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ IMF کے رحم و کرم پہ جب تک ہم اپنے اکنامک ایکٹیویٹیز کو نہیں بڑھائیں گے، اکنامک گروتھ ہماری نہیں بڑھے گی، ہم جب تک جو ہے وہ IMF اور دوسرے ایسے اداروں کے رحم و کرم پہ ہوں گے اور ہمیں مجبوراً ان کی پالیسیز کو جو ہے نا وہ پھر ان کے اوپر چلنا پڑتا ہے. اچھا یہ جو سولر سسٹم کا ایک نیا منصوبہ جو ہے پیپلز پارٹی کے جانب سے ایک انیشیٹو لیا گیا ہے، یہ صرف سندھ تک محدود رہے گا، سندھ کے اضلاع تک محدود رہے گا، یا یہ پورے پاکستان کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے اسٹرگل کرے گی تاکہ پنجاب کی عوام جو ہے، بلوچستان کی عوام جو ہے، باقی سب کو یہ جو منصوبہ ہے اس کو پرووائڈ کیا جائے؟ دیکھیں آج بھی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ ہم سندھ، بلوچستان اور پورے ملک میں ہم چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پورے ملک کی پارٹی ہے کہ سب اس سے مستفید ہوں. اور اس میں جو ہے دیکھیں سندھ میں یہ فرسٹ فیز کے اندر ابھی 50,000 پینلز دیے جا رہے ہیں اور 2 لاکھ جو ہے وہ دینے کا اس کے اندر جو ہے وہ ابھی ٹارگٹ رکھا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بلوچستان میں بھی جو ہے وہ اس پروگرام کو آگے لے کے جایا جائے گا. اور اسی سلسلے میں انہوں نے CM سندھ کو چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ آپ پرائم منسٹر سے ملیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ہم نے یہ جو سولر انرجی کو عوام میں جو ہم ڈیلیور کر رہے ہیں تو آپ بھی اسی پائلٹ پروجیکٹ کو اگر ریپلیکیٹ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی ان صوبوں کے لیے جہاں پہ بہت شدید ضرورت ہے. وہاں بھی عوام جو ہے وہ بجلی کے ہیوی بلوں سے جو ہے وہ ستائی ہوئی ہے. تو پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے پیپلز پارٹی کے دروازے ہمیشہ جو ہے وہ سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں. اور یہ جو پروجیکٹ ہے سولر انرجی کا، یہ انشاءاللہ اگر لگتا ہے کہ PM جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیں تو یہ اور صوبوں کے لیے بھی ہے. اچھا ابھی ہم دیکھیں کہ حکومت جو ہے اس کے پاس، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مخصوص نشستوں جو ہیں وہ جانے کے بعد 2/3 میجورٹی نہیں ہے. قومی اسمبلی کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں، اجلاس میں حکومت اور پیپلز پارٹی جو ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کوششیں کر رہی ہیں کہ ہم کوئی نئی امینڈمنٹ لائی جائے، لیکن ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپوزیشن کو ساتھ کٹھا لے کے چلنا پڑے گا، کیونکہ ادروائز 2/3 میجورٹی تو نہیں ہے. اور اگر وہ 2/3 میجورٹی حاصل کرنے کے لیے کیا وہ اپوزیشن کے پاس جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اپوزیشن جو ہے وہ کسی بھی پارلیمان کا جو ہے نا وہ اہم جز ہوتی ہے، آرگن ہوتی ہے. اور جہاں پہ آپ کی ایک کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو اپوزیشن ہوتی ہے تو اس میں لیجسلیشن میں بھی آسانی ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے جو ہیں وہ افیئرز چلانے میں بھی آسانی ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن آل دا ٹائم جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کرے. جب کوئی لیجسلیشن ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے ان کا پروٹیسٹ اور ہنگامہ آرائی کی وہ پالیسی کے اوپر گامزن ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن کو جو ہے وہ تھوڑا عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پاکستان کے لیے جو ہے انہیں ایک پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے. جس پارلیمان کا حصہ ہیں، جس میں وہ آتے ہیں، اس کا حصہ رہنا چاہیے. اور جہاں تک آپ یہ جو ریزرو سیٹس کا کہہ رہے ہیں، میرا ابھی جہاں تک مجھے نالج ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ
कोर्ट के अंदर जो है वो ये मामला गया है, जो एक पार्लियामेंट में कानून साजी की गई और आगे दिया गया, क्योंकि देखें जो पार्लियामेंट है ना वो सुप्रीम है, उसी के जो हैं ये इदारे आपके जो हैं कोर्ट्स, आपकी फ़ौज, ये सब उन्हीं के साथ जो है ना उनके साथ मिलके काम करते हैं और उनके जो हैं वो पिलर्स हैं। तो पार्लियामेंट जो है वो अपना रोल प्ले करते हुए लेजिस्लेशन भी कर रही है, आगे वो देख भी रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मसले का भी जो है, जो ये शायद आईनी बहरान ऐसा अभी तक है नहीं, होगा तो इसके ऊपर भी जो है वो पार्लियामेंट काबू पाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीला अंसारी साहिबा, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हींअर वक्त थियो आहे ब्रेक जो, हिते वठूं था शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। एक दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार चऊं था। नाज़रीन, असां सां गॾु हींअर मौजूदु आहिनि मुल्की सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि राजा ख़ालिक, जेके नून लीग जा अॻवान आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, वॾी महिरबानी असांखे वक़्तु ॾियण जे लाइ। सर, कीअं था ॾिसो ही इक़्तिदार जे शहर में वॾियूं ख़बरूं पियूं अचनि ऐं मुलाक़ातूं थियनि पियूं, उन्हनि खे अव्हां कीअं था ॾिसो? छा हुकूमत हाणे अपोज़िशन ॾांहुं वेंदी? छो जो सदर साहब हाणे मुलाक़ातूं करे पियो JUI सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान सां। अव्हां कीअं था ॾिसो पॉलिटिकल सिचुएशन खे? ॾिसो, इहे जेके बि हिन वक़्तु डेवलपमेंट्स थियूं आहिनि, इहे रूटीन जूं डेवलपमेंट्स आहिनि ऐं सियासी अॻवान हिक ॿिए सां ज़रूरु मिलंदा बि रहंदा आहिनि। जेसि ताईं हुकूमत जो तालुक़ु आहे त हुकूमत स्मूथली हले पई ऐं पंहिंजो मुदो इनशाला पूरो कंदी। जेको अवाम जी तरफ़ां ॾिनल मैंडेट आहे, उन मैंडेट जो एतिराम कंदे इनशाला सभई इदारा, सभु जेके बि जमहूरियत पाकिस्तान में हिन वक़्तु जंहिं तरीक़े सां आहे, उहा इनशाला पंहिंजो मुदो पूरो कंदी ऐं हर शइ पंहिंजे टाइम ते थींदी इनशाला। बाक़ी इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं रूमर्स जेके आहिनि त हुकूमत अपोज़िशन तरफ़ पई वञे या अपोज़िशन सां, इन क़िस्म जी काई बि ॻाल्हि न आहे। हा, कुझु धुरियूं आहिनि जेके मुल्क खे डिस्टेबलाइज़ करणु चाहिनि थियूं, जेके जिन जो माज़ी बि गवाह आहे त फॉरेन फंडिंग वठी करे पाकिस्तान खे जंहिं तरीक़े सां नुक़सानु पहुचाइण जी कोशिशि कई वई हुई, उन्हनि सभिनी सां रियासत हाणे फ़ैसिलो कयो आहे, उन्हनि सां बाक़ाइदा आइनी हथनि सां उन्हनि सां निपटियो वेंदो इनशाला। सर, जेके मखसूस सीटूं आहिनि हाणे, उहे मखसूस सीटूं जेके कोर्ट जे हुकुम सां माना उहे नथियूं मिलनि, जेकॾहिं उहे नथियूं मिलनि त पोइ हाणे क़ौमी असेंबली जा जेके इजलास थियनि पिया, उन्हनि इजलास में जेके 2/3 मेजॉरिटी जेका आहे हिन वक़्तु हुकूमत वटि नाहे रही, छा अपोज़िशन जी हेल्प खां सवाइ 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत हासिल करे सघंदी ऐं का नई अमेंडमेंट आणे सघंदी? ॾिसो, 2/3 मेजॉरिटी त मखसूस निशस्तनि खां अॻु में बि कोन हुई। 2/3 मेजॉरिटी जी ॻाल्हि कोन्हे। ॻाल्हि इहा आहे त कानून साज़ी करण लाइ असांखे सिंपल मेजॉरिटी खपे थी, उहा असां ऑलरेडी मौजूदु आहे। आए ॾींहुं रूल ऑफ बिज़नेस जेके आहिनि उहे कंप्लीट थींदा रहंदा आहिनि। जेके बि बिल्स मूव थिया आहिनि, एक्ट थिया आहिनि, उहे सभु पास बि थींदा रहिया आहिनि। सो इन करे जेका पार्लियामान जो जेको बिज़नेस आहे उहो हलंदो पियो रहे। उनजे लाइ असांखे 2/3 मेजॉरिटी जी ज़रूरत ई कोन्हे ऐं जेके बि गोल्स आहिनि इनशाला उहे अचीव कंदासीं। सभ खां वॾो अहम गोल आहे पाकिस्तानी मईशत खे बहितर करणु ऐं इनशाला पाकिस्तान जी मईशत बहितर थींदी पई वञे ॾींहुं ब ॾींहुं, अञा बि वधीक बहितर थींदी इनशाला। सर, अपोज़िशन पार्टियूं जेके आहिनि, जमात इस्लामी थी वई या कारोबारी बिरादरी थी वई या जेके यूटिलिटी स्टोर्स जी बंदिश ख़िलाफ़, इहे त एहतजाज डेली बेसिस ते थियनि पिया ऐं उन्हनि जो हिकिड़ो ई मुतालबो आहे महांगाई खे घटि कयो वञे। सर, जेकॾहिं मुआशी हालात जेके आहिनि उहे बहितर थियनि पिया त पोइ महांगाई घटि छो नथी थिए? ॾिसो, सभ खां पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त ही सियासी जमातूं न आहिनि जिन खे तव्हां सियासी जमात चओ था। मिसाल तौरु जमा इस्लामी जो ज़िक्र कयो, जमा इस्लामी हिकु दहशतगर्द जमात आहे। अहिड़े तरीक़े सां PTI हिकु दहशतगर्द जमात आहे ऐं जेकॾहिं जमा इस्लामी खे वाक़ई महांगाई जो वॾो दर्द ऐं सूर आहे ऐं हुनखे ख़बर आहे त वाक़ई महांगाई वधी वई आहे ऐं बिजली जी क़ीमतूं वधी वयूं आहिनि, त पोइ हुननि खे इहा बि ख़बर हुजणु घुरिजे। बग़ैर त पढ़ियल लिखियल माण्हू लॻंदा आहिनि, त हुननि खे ख़बर हुजणु घुरिजे त महांगाई कंहिंजे करे वधीक आहे। त हुननि खे बहितर आहे त जेल जे ॿाहिरां वञी करे एहतजाज कनि ऐं इहो मुतालबो कनि त इमरान ख़ान खे फांसी ॾिनी वञे, छो जो हुन पाकिस्तान जे माण्हुनि जो जीअण हराम कयो आहे। IMF सां मुआहिदा करे, उन्हनि मुआहिदनि सां बिटरे करे जंहिं तरीक़े सां पाकिस्तानी मईशत खे तबाह करण जी साज़िश कई वई, त उनजो ज़िम्मेदार त ख़ान आहे। हाणे उनजी त बी टीम लॻी पई आहे जमा इस्लामी। सो ही त मां सम्झां थो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु सियासत पिया कनि ऐं माण्हुनि जे जेका मां सम्झां थो उन्हनि खे अंधेरे में रखण जी कोशिशि पिया कनि
नेक नियति किथे बि कोन्हे। हुकूमत खे ख़बर आहे त महांगाई ज़रूरु आहे ऐं हुन जा कारण जेके आहिनि उहे बि मां तव्हांखे ॿुधाए छॾिया। IMF सां जंहिं क़िस्म जूं कड़ियुनि ॾुखियुनि शर्तुनि ते मुआइदा कया विया, उन्हनि माण्हुनि जी तरफ़ां कया विया जेके माण्हू चवंदा हुआ त असां IMF जी तरफ़ वियासीं त असां ख़ुदकुशी कंदासीं, ऐं उन खां पोइ वरी ताबीरूं पेश कंदा रहिया। ऐं जंहिं तरीक़े सां हुननि तर्ज़ हुक्मरानी कई, मतिलबु तोहफ़े में मिलियल घड़ियूं बि न छॾियूं। सो उहे सभिनी जे साम्हूं आहिनि ऐं बिलियन्स ऑफ डॉलर जेके पाकिस्तान जा हुया उहे उन्हनि खणी करे हिकिड़े मख़सूस कारोबारी शख़्सियत जे अकाउंट में विझी छॾिया डायरेक्टली, ऐं बंदि लिफ़ाफ़नि ते काबीना खां दस्तख़तूं कराईंदा रहिया आहिनि। इहे सॼी दुनिया खे ख़बर आहे। सो इन करे जमात इस्लामी ऐं ॿियनि जमातुनि खे जेके महांगाई जो रोअनि थियूं, उन्हनि खे खपे त सभ खां पहिरियों उनजे ज़िम्मेदार जो घेराव कनि ऐं उनखे मंतक़ी अंजाम में पहुचाइण लाइ जदोजहद कनि। ऐं जे नथा कनि ऐं सिर्फ़ु इहो राग आलापण त बसि महांगाई आहे ऐं बसि रोडनि ते अचणु ऐं उन महांगाई में जेका आवाम ऑलरेडी छिटियल आहे वरी आवाम खे ॾुखियाई में विझणु, मां सम्झां इहा सियासत न या दहशतगर्दी आहे। राजा ख़ालिक साहब, ॿिए तरफ़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ बलूचिस्तान पहुची विया आहिनि ऐं एपेक्स कमेटी जो इजलास बि थियणु वञे पियो। छा एपेक्स कमेटी जे इजलास में को सिक्योरिटी जे हवाले सां कहिड़ियूं डेवलपमेंट साम्हूं ईंदियूं ऐं कहिड़ा फ़ैसिला जेके आहिनि उहे साम्हूं ईंदा सर? ॾिसो, बलूचिस्तान में हाणे ताज़ा जेके वाक़ियात थिया आहिनि उहे ॻणितीअ जोगा वाक़ियात आहिनि ऐं वज़ीर आज़म उनखे उनजो स्टैंड वरितो आहे ऐं वज़ीर आज़म चाहे थो त पाकिस्तान जे ॿियनि सूबनि वांगुरु बलूचिस्तान में बि हालतूं नॉर्मलाइज़ थियनि ऐं उते बि असांखे साॻी ॾिसो जेके हालतूं पहिरियों मुल्क जे अंदरि थियूं पए ऐं हिकिड़ी जमात डायरेक्टली फॉरेन फंडिंग वठी करे हिते कार्रवाइयूं कंदी रही आहे ऐं जॾहिं असां उन रियासत उनखे पकिड़े वरितो आहे ऐं उनजी एक्टिविटीज़ खे बंदि कयो आहे त रियासत जे मुख़ालिफ़ जेके ॿियूं धुरियूं आहिनि या जेके ॿिया गिरोह आहिनि उन्हनि ते फॉरेन फंडिंग ख़र्च करे पाकिस्तान में दहशतगर्दी जेके ॿी नई वेव आंदी पई वञे। ऐं हाणे मां सम्झां थो इन खां अॻु में जेके बि पाकिस्तान जी दुश्मन क़ुवतूं हुयूं उहे सभई हथियार हलाए चुकियूं आहिनि। हाणे आख़िरी उहो 2 हथियार हलाइण में जी कोशिशि में लॻी पियूं आहिनि। हिकिड़ो त फ़िरक़ावारियत खे हवा ॾिजे ऐं ॿियो त लिसानियत खे हवा ॾिजे ऐं सूबाइयत खे हवा ॾिजे। ऐं जेको बलूचिस्तान में वाक़ियो थियो आहे जंहिं तरीक़े सां उन मां लॻे थो त हू उनखे टारगेट कयो अथऊं त बाबा कंहिं तरीक़े सां बि बलूचिस्तान मां इहा हवा उथे ऐं सूबाइयत जेका आहे ऐं लिसानियत जेका हवा आहे इनखे फ़ोकियत मिले। पर इनशाअल्लाह पाकिस्तान जी रियासत जी नज़र आहे सभिनी शयुनि ते ऐं जंहिं तरीक़े सां इन खां अॻु में असां इंटरनेशनली दहशतगर्दियुनि खे रोकियो आहे हिननि खे बि रोकींदासीं इनशाअल्लाह ऐं पाकिस्तान में ऐं बलूचिस्तान में ख़ासि तौर ते अमन क़ाइमु थी वेंदो इनशाअल्लाह। राजा ख़ालिक साहब, इहो ॿुधाइजो त ज़रियनि खां इहो मालूम बि थियो आहे त पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जा इख़्तिलाफ़ात बि जेके साम्हूं अचनि पिया त पीपल्स पार्टी इहा ॻाल्हि करे पई नून लीग खे त जे असां खां पुछण खां बग़ैर को बि फ़ैसिलो हुकूमत न कंदी त असां उन्हनि सां गॾु बीहंदासीं, अदरवाइज़ जेको आहे असां पंहिंजूं राहूं जुदा कंदासीं। उन हवाले सां छा चवंदा सर? ॾिसो, हिकिड़ी शइ असां सभिनी खे सम्झणु घुरिजे त पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून ॿ अलॻि अलॻि जमातूं आहिनि, ॿिन्ही जो अलॻि अलॻि मंशूर आहे, ॿ अलॻि अलॻि अपोज़िट हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु तमामु घणियूं सियासत कंदी रहियूं आहिनि। हाणे बि गॾिजी हुकूमत करण जो मक़सदु इहो न आहे त को असां हिकिड़ी प्लेटफॉर्म ते अची विया आहियूं या हिकिड़ी जमात आहे। असां बिल्कुलु पंहिंजी सियासी मुखालफ़त कंदा रहंदासीं, हिक ॿिए सां हिक ॿिए जी पॉलिसियुनि सां इख़्तिलाफ़ बि थींदो रहंदो ऐं इहे रूटीन जी ॻाल्हि आहे, हिन में का ॻणिती जो बि ॻाल्हि कोन्हे। बाक़ी पीपल्स पार्टी जो जेको इहो दावा आहे या जेका हुननि बयान ॾिना आहिनि कुझु रहनुमानि त हुकूमत सां पुछी करे अहम फ़ैसिला करे त बिल्कुलु उनखे जे लाइ उन में काबीना में शामिलु थियणो पवंदो। हुकूमतुनि जूं पंहिंजूं मजबूरियूं हूंदियूं आहिनि, कुझु फ़ैसिला काबीना खे वठिणा हूंदा आहिनि ऐं काबीना आज़ादु हूंदी आहे पंहिंजा फ़ैसिला खणण में। जेकॾहिं पीपल्स पार्टी काबीना में शामिलु न थींदी त पोइ मादरत सां लाज़मी ॻाल्हि आहे हुनखे ख़बर न पवंदी, पोइ हुनजे लाइ हिकिड़ो ॿियो फोरम को जोड़े सघिजे थो त उन्हनि खे काबीना ॾियण में कयल फ़ैसिलनि खां आगाह कयो वञे। पर जेकॾहिं हुनजी इहा डिमांड आहे त पोइ उन्हनि खे काबीना में वज़ारतूं वठणियूं पवंदियूं ऐं गॾियल हुकूमत करणी पवंदी। हिन वक़्तु पीपल्स पार्टी जो पंहिंजो इहो फ़ैसिलो आहे त हू सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु आइनी पोस्टुनि ते रहंदा ऐं हुकूमत जेको वहिंवार आहे उहो कोन हलाईंदा। जॾहिं हू हुकूमत जो वहिंवार हलाइनि कोन था त पोइ हुनजी इहा जेका मुतालबो आहे त असां पुछी करे सभु हुकूमत कमु कया वञनि। मां सम्झंदो हिन में मूंखे ॿाराणप नज़र अचे पई, पर जेकॾहिं वाक़ई हू सीरियस आहिनि हुकूमत हलाइण में त हुकूमत जो हिसो बणिजनि ऐं काबीना जो हिसो बणिजनि। राजा ख़ालिक साहब, अॼु सिंध में बि डेवलपमेंट साम्हूं आई आहे। पीपल्स पार्टी जेका गवर्नमेंट आहे सिंध में उन्हनि जेको आहे सोलर सिस्टम जो नओं मनसूबो आणे छॾियो आहे जेको सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि ताईं पहुचायो वेंदो, जंहिंमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु पिणु ख़िताब बि कयो आहे। उन्हनि जो चवणु हो त जेतिरो थी सघंदो असां आवाम खे जेको आहे रिलीफ ॾींदासीं। छा अहिड़ा ई मनसूबा सर जेके सोलर सिस्टम वारा आहिनि उहो वफ़ाक़ी हुकूमत छो नथी आणे?
ॾिसो, सभ खां पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त अरिड़हीं तरमीम खां पोइ तमामु घणियूं शयूं जेके आहिनि उहे सूबनि जे हवाले आहिनि ऐं सूबनि वटि जेको तरक़ियाती बजट आहे उहो सूबनि वटि वधीक आहे, वफ़ाक़ वटि तमामु लिमिटेड बजट आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त सूबा पंहिंजे वसाइल मां पंहिंजे आवाम खे रिलीफ ॾियनि पिया। जीअं तव्हां ॾिठो त पंजाब में मरियम नवाज़ साहिबा पंहिंजे सूबे पंजाब जे बजट मां रिलीफ ॾेई करे उतां जी बिजलीअ जा अघ घटि कया। अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं सिंध में सोलर जो हिकिड़ो मनसूबो आंदो वञे पियो, जेको ऑलरेडी पंजाब में त आहे ऐं उते कमु करे पियो इहो मनसूबो, पर जेकॾहिं सिंध में बि कनि पिया त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। सिंध जे माण्हुनि खे बि सुख जो साह मिलंदो ऐं राति जो न सही पर ॾींहं जो गर्मीअ जे दौरान बिजली त घटि में घटि पखा त हलंदा सोलर ते। पर हाणे असां माज़ी में ॾिठो आहे त पीपल्स पार्टी जा इन क़िस्म जा मनसूबा पीपल्स पार्टी जे पंहिंजनि माण्हुनि ताईं महदूद रहंदा आहिनि ऐं जेके उन्हनि जा वर्कर्स आहिनि या जेके उन्हनि जा उहिदेदार आहिनि, बसि उन्हनि जी ओताकुनि ते इहे सोलर प्लेट नज़र ईंदियूं ऐं ॿाहिरि आम माण्हू हुन मां मुस्तफ़िद न थी सघंदो आहे। त असां त चवंदासीं बिलावल साहब खे त हिन ॻाल्हि खे यकीनी बणाए त इहो मनसूबो साफ़ शफ़ाफ़ हुजे ऐं हर ग़रीब ऐं मुस्तहिक माण्हू ताईं इहो मनसूबे जे जेके फ़ाइदा आहिनि उहे पहुचनि। सुठी ॻाल्हि आहे जेकॾहिं हू सोलर सिस्टम खे आणनि था ऐं इहो मनसूबो सिंध में कमु करे पियो, असां तारीफ़ बि कंदासीं ऐं हिनखे ठाराईंदासीं बि इनशाला। सर, ॿिए तरफ़ इहो बि साम्हूं आयो आहे त नवाज़ शरीफ़ जेको आहे लंडन वञण जूं हाणे तयारियूं करे पियो, इन हवाले सां छा चवंदो? छो जो सोशल मीडिया ते अहिड़े क़िस्म जा ट्रेंड्स हलनि पिया, उन हवाले सां तव्हां छा चवणु चाहींदो? सोशल मीडिया जे ट्रेंड्स ते नथा वञूं, मां तव्हांखे इहो ॿुधाए थो छॾियां, कंफर्म थो ॿुधायां त मियां नवाज़ शरीफ़ पाकिस्तान खां ॿाहिरि कॾहिं बि कोन वेंदो ऐं मियां नवाज़ शरीफ़ पाकिस्तानी आहे। मियां नवाज़ शरीफ़ पाकिस्तान जो लीडर आहे, बल्कि हिन जे उबतड़ तव्हां ॾिसंदव त अनक़रीब तमामु जल्द मियां नवाज़ शरीफ़ पाकिस्तान जी सियासत में तमामु एक्टिव रोल अदा कंदो ऐं पार्टी जो सदर आहे। हुन हाणे पार्टी खां सदारत जो वोट वरितो आहे ऐं तव्हां ॾिसंदव त सिंध में बि तमामु जल्द मियां नवाज़ शरीफ़ साहिब जलसनि जो आगाज़ कंदा ऐं एक्टिव पॉलिटिक्स में हिसो वेंदा इंशाल्लाह। सर, हिन गवर्नमेंट खे हींअर बि त नवाज़ शरीफ़ लीड करे पियो ऐं जेकॾहिं नवाज़ शरीफ़ लीड करे पियो त पोइ बहितरी छो न पई अचे? छो जो हींअर नवाज़ शरीफ़ जी जेका पॉलिटिक्स रही आहे, उन्हनि जॾहिं बि उन्हनि जी गवर्नमेंट आई आहे उन्हनि हमेशह महांगाई खे कंट्रोल कयो आहे, उन्हनि इकोनॉमी जेका आहे उहा बहितर कई आहे, उन्हनि टैक्सिस खे घटायो आहे। पर हाणे बि त नून लीग जी गवर्नमेंट आहे, पोइ टैक्सिस छो नथा घटिजनि ऐं महांगाई घटि छो नथी थिए? ॾिसो, तव्हांखे माण्हूअ खे तसलसुल हुनजो बरक़रार न रखंदव ऐं हुनजी पॉलिसियुनि जो तसलसुल में बार बार हुनखे गद्दार कॾहिं चवंदव, कॾहिं चोर, कॾहिं करप्ट, कॾहिं हुनखे हुकूमत खां हटाए छॾींदव त हुनजा नतीजा लाज़मी ॻाल्हि आहे मुल्क भोगींदो आहे। तव्हां मोबी वतन माण्हुनि खे जॾहिं पुट खां पघार न वठण जे ॾोह में कढी छॾींदव ऐं हुनखे जलावतन करे छॾींदव, हुनखे जेल में विझी छॾींदव, हुनखे वज़ारत उज़्मान तां हटाए छॾींदव त पोइ हुनजी क़ीमत अदा करणी पवंदी जेको मुल्क अदा करे पियो। उन वक़्तु मियां साहब चयो हुयो, जॾहिं हुन नारो हयो, मुंहिंजे क्यों निकाला, हुन ते मीम्स ठहिया, हुन ते माण्हुनि मज़ाक़ूं कयूं, पर मियां साहब जे पुछण जो मक़सदु उन वक़्तु बि इहो ई हुयो त तव्हां मूंखे कढियो छो आहे? तव्हांखे ख़बर न आहे त मूंखे कढण सां पाकिस्तान तमामु घणो पोइ हलियो वेंदो ऐं उहो वियो। तव्हां जॾहिं कंहिं पॉलिसीज़ जे तसलसल खे बरक़रार न रखंदव त पोइ ईअं ई थींदो आहे। उन खां पोइ जेके माण्हू आया, जंहिं तरीक़े सां उन्हनि मुआदा कया, जंहिं तरीक़े सां पाकिस्तान जी रियासत खे उहे मजबूर करे विया ऐं उनजे राहुनि में माइंस विछाए छॾियऊं, बारूदी सुरंगियूं विछाए छॾियऊं, उनजे बावजूद बि जेकॾहिं हिन वक़्तु मुस्लिम लीग नून जी हुकूमत न हुजे हा, मां सम्झां थो मुल्क डिफॉल्ट करे वञे ऐं ॿ दफ़ा मुल्क खे डिफॉल्ट जे बहाने तां वापसि खणी अची करे हिन वक़्तु जेकॾहिं मुल्क हले पियो, हुनजी मईशत तवानाई तरफ़ वञे पई ऐं किथे किथे महांगाई वधीक आहे ऐं किथे किथे महांगाई घटि आहे, जेको मिलल जुलल रुझान हिन वक़्तु आहे बि उहो मुस्लिम लीग नून जी बहितर कारकर्दगी जे करे ई आहे। जेकॾहिं ॿी का सियासी जमात हुजे हा त शायदि असांखे इहे एतिरा बहितर रिज़ल्ट न मिली सघंदा। इन करे असांखे गिलास अधु ख़ाली आहे खां बहितर आहे इहा अप्रोच रखणु घुरिजे त गिलास अधु भरियल आहे, बाक़ी जेको अधु ख़ाली आहे उहो भरिजी वेंदो इंशाल्लाह। ठीकु आहे राजा ख़ालिक साहब, वॾी महिरबानी असांखे टाइम ॾियण जे लाइ। नाज़रीन, अवां असांजे पैनलिस्ट जी ॻाल्हि ॿुधी, जेके नून लीग जा अॻुवान आहिनि उन्हनि तफ़सीली तौर ते असांखे जेको आहे ॿुधायो हुकूमत जूं पॉलिसियूं, मुआशी मसाइल ऐं इहे जेके इशूज़ हुया उन्हनि असांखे पॉलिटिकल तफ़सीली तौर ते ॿुधायो। उन्हनि असां सां गॾु मौजूदु हुआ। नाज़रीन, हींअर वक़्तु हुआ आहे ब्रेक जो, हिते वठंदो शॉर्ट ब्रेक। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाज़रीन जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे सॼे सिंध में पूरे मुल्क में बरसात जी सूरत हाल तमामु घणी वधे पई ऐं बरसात जो जेको सिलसिलो आहे उहो वक़फ़े वक़फ़े सां जारी आहे। कराची में बि बरसात तमामु घणी थिए पई ऐं उन खां अलावा तूफ़ान अचण जा पिणु ख़दशा जेके आहिनि ज़ाहिर कया विया आहिनि। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि सरदार सरफराज़ जेके चीफ मेट्रोलॉजिस्ट आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सरदार सरफराज़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे देखते हैं मौसम के हवाले से तूफान आने के भी खदशात जो बताए जा रहे हैं, मौसम के हवाले से कब तक बारिशें चलेंगी और तूफान की सूरत हाल, क्या वाकई में तूफान आने के खदशात हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मानसून हवाएं तो खैर पिछले 3-4 दिन से मुसलसल दाखिल हो रही हैं। सिंध में खासकर बड़ी तेज बारिश चल रही है। पिछले 2-3 दिन से बदीन में, मीरपुर खास में, थरपारकर में और उमरकोट, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, और कराची में भी पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ इतनी बहुत तेज मूसलाधार नहीं हुई अभी, लेकिन आगे चलकर इम्कान है इसका भी। तो जो एक्चुअली डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन भारतीय इलाके रन ऑफ कच्छ पर मौजूद है, कराची से कोई 200-250 किलोमीटर जनूब मशरक में। तो ये एक्चुअली इसका ट्रैक रहा है पिछले 3 दिन से वस्ती भारत से राजस्थान, फिर गुजरात, फिर इस तरह से, तो आगे भी वेस्ट की तरफ निकलेगा। तो समंदर में जब इंटर होगा कल सुबह, तो इम्कान ये है कि ये साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेकिन शॉर्ट लिव्ड साइक्लोन होगा, एक आध दिन के लिए ही ऐसे इम्कान है कि, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, क्योंकि इसकी मूवमेंट अगर स्लो होती है तो फिर 2 दिन लग सकते हैं, अदरवाइज एक ही दिन के लिए फिर वीक शुरू होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके इन्फ्लुएंस में तेज़ बारिशें हैं। सिंध के जो ज़ेरी सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं तमाम ही, कराची, आगे ठट्ठा, सुजावल, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, ऊपर टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद, मटियारी तक बहुत तेज़ बारिशें हैं, तेज़ आंधी है, गरज चमक है, समंदर में तुगयानी है। और सिंध के जो वस्ती और बालाई अजला हैं, ठट्ठा और लाड़काना, सक्खर वगैरह, दादू और नवाबशाह, खैरपुर वगैरह, उन इलाकों में भी बारिश है अगले 2 दिन, कहीं पर दरमियानी, किसी किसी जगह पर तेज़। और इसी तरह से बलूचिस्तान की तरफ ये निकलेगा, तो बलूचिस्तान का जो मकरान डिवीजन है उस पूरे में अच्छी तेज़ बारिश बरसाता हुआ ओमान की तरफ जाएगा। सरदार सरफराज साहब, ये बताइएगा कि दरियाए काबुल से बहुत बड़ा जो सैलाब है वो सिंधु दरिया में दाखिल होने जा रहा है कुछ दिनों में, और ये डेवलपमेंट जो है आज सामने आ रही है, तो इस हवाले से आप उसको कैसे देखते हैं? क्या हुकूमत को कैसे इकदामात लेने चाहिए सर? देखिए, दरियाई जो कैफियत है ना, वो अभी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, सैलाब नहीं है, मतलब मीडियम लेवल का एक तरह से फ्लो है। इंडस पे भी, नौशहरा पे और फिर नीचे भी, और बाकी जगहों में तो लो लेवल में है फ्लड इस वक्त कोई, क्योंकि दरियाओं के कैचमेंट एरियाज के ऊपर अभी तक कोई बहुत हैवी स्पेल नहीं हुआ है। तो कैचमेंट एरियाज के ऊपर अगर बहुत तेज़ बारिश हो जाए, आगे हो सकता है इसका इम्कान हो जाए, लेकिन फिलहाल दरियाओं में सूरत हाल उतनी उस तरह की नहीं है, डेंजरस नहीं है। जी सर, वैसे तो ये बताया जा रहा है कि 30 से 31 अगस्त तक ये बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। क्या मजीद सिलसिला जो है वो बढ़ने के इम्कानात हैं, या कुछ आपके हवाले से आपके पास अपडेट यकीनन होगी तो वो बताइए, कब तक बारिशें होंगी और हुकूमत को कौन से स्टेप्स पहले से ही लेने चाहिए? देखें, जो करंट स्पेल है ना, ये 31 अगस्त तक चलेगा, और कुछ एरियाज में जैसे बलूचिस्तान की तरफ निकलेगा ये स्पेल, तो ये जो डिप्रेशन या फिर साइक्लोन और फिर वापस डिप्रेशन में कन्वर्ट होने के बाद, तो बलूचिस्तान के साहिल के साथ साथ तो वहाँ तो पहली या 2 सितंबर तक ये बारिशें हो सकती हैं, खासकर गवादर साइड पे, और ऊपर पंजगू, तुर्बत, पूरा जो केस डिस्ट्रिक्ट है, हवारान डिस्ट्रिक्ट है, मकरान डिवीजन पूरा ही कह लें। और इसी तरह से ऊपर नॉर्थ में पूरे पाकिस्तान यानी पंजाब भर में 31 अगस्त तक ये स्पेल है। फिर एक आध दिन के वक्फे के बाद पंजाब में तो 2 या 3 सितंबर से एक और स्पेल दाखिल होगा। तो यूजुअली 15 या 18 सितंबर तक तो मानसून का स्पेल रहता है, पाकिस्तान में आते रहते हैं, तो बारिशें आगे भी कम से कम 2 स्पेल और हो सकते हैं सितंबर में। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज जेके हुआ असां सां गॾु मौजूदु हुआ, उन्हनि तफ़सीली तौर ते असांखे ॿुधायो त बरसाति जो सिलसिलो जेको आहे वधी बि सघे थो, पर बर वक़्तु सैलाब जो को ख़तरो न आहे। इन सां गॾु नाज़रीन, पंहिंजो जेको प्रोग्राम आहे उहो पुॼाणी ते पहुतो। मूंखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।